Let's start the multiplication of matrices. In multiplication of matrices, it is very important that कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं. अगर आपने ये सीख लिया तो आई थिंक स्टूडेंट्स you always ready to multiply to the any types of matrix like any order or any types, means there are many types of matrix already I told you in the previous video. So now let's begin. It is the example of any matrix of order m by n, and the second matrix which order is n by p. So now I am telling you what is the condition when we multiply two matrix. अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कभी भी दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ आपने देखा कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m by n है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर n by p है. तो ये दोनों वैल्यूज जब सेम होती है, मींस फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती है देन वी आर एबल टू मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिक्स. तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाते हैं और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी फर्स्ट एंड लास्ट लाइक दिस m मल्टीप्लाई p. It is the resultant matrices. Now it is the example. Suppose that a is equal to 1 2 3 4 5 6. What is the order of this matrix? It is 2 by 3. And now another is b is equal to 1 2 5. What is the order of this matrix? It is 3 by 1 because there are 3 rows and 1 column. So now you see that in both the orders this value is equal, 3 and 3. So we are able to multiply both the matrix. And now what is the value of AB? So first of all you write the value of matrix A, then value of matrix B. And now what is the rule to multiply these matrix? Rule बिल्कुल सिंपल है, आप रो को पकड़ो और दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम को पकड़ो. Means matrix is always multiplied in the form of row by column. So there are how many rows are there in first matrix? There are 2 rows and 1 column in the second matrix. So rule say that first row multiply by the first column. Then I think there are no column, so it is enough for first row. And now second row multiply to the first column. That's all. So it is a very simple rule. And now what is the process to multiply then? It is the first row, it is first column. So these corresponding elements of the rows and columns are multiplied to each other. And what is the meaning of corresponding values? The corresponding values, it means the first element of the first row is 1 and the first element of the first column is 1. So 1 is multiplied by 1, then 2 is the second element of the row and 2 is the second element of column. So 2 multiplied by 2. Similarly, 3 is the third element of row and this 3 is the third element of column. So 3 multiplied by 3, and after that you will apply the positive sign between these elements. You always apply the positive sign between these corresponding elements when you multiply them. Okay, इसी तरह से अब आप सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज द सेकंड रो, it is the first column, so first value multiplied by the first, similarly second value multiplied by the second, and third value multiplied by the third, and after that you will apply the positive sign between them. And now you simplify it. 1, it is 4, it is 9, and here it is 4 plus 10 plus 18. So now it becomes 9 4 13 140, and it is 28 and 4 32. So what is the order of the answer? The order of this answer is 2 by 1. So now we will check that whether this answer is correct or not. It is 2 by 3 matrix and the second is 3 by 1. Both values are equal. So the resultant matrix is come first and last, that is 2 by 1. So I think this result is correct. Now let's see the another example. And in this example, what is the order of this matrix? The order of this matrix is 1 by 3. And what is the order of this one? There are 3 rows and 1 column, so it is 3 by 1. So I think you understand that कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी. एंड इट इज क्लियर 1 by 1 means singleton matrix. So now let's start the multiplication of these two matrices A and B.
and the process of multiplication is same. First row multiply by the first column. So first element multiply by the first element, then second element multiply by the second, and third element multiply by the third. That's all. And now you multiply them 9 and 8 17, 17 and 5 22. So there are only a single element is come 22. So this type of matrix is called single tone matrix because there are a single element is come. तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है देन यू राइट कमेंट्स इन माय कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, अगर आप कुछ और अपनी तरफ से कहना चाहते हैं पर्टिकुलर कुछ भी, अगर आपके मन में क्वेरी है देन यू आल्सो राइट इन माय कमेंट्स बॉक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज आपके शेयरिंग के बिना इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको और अच्छा वीडियोस बनाकर दे पाऊं और अच्छा मटेरियल बना के दे पाऊं। तो जितना ज्यादा आप मुझे सजेशन देंगे उतना इंप्रूवमेंट आता जाएगा। सो नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल अगेन। Let's see the another example. And now in this example, you see that what is the order of the first matrix. The order of this matrix is there are 1, 2, and 3 rows. So the order of this one is 3 by 1. And there are only 1 row and 3 columns. So the order of this matrix is 1 by 3. So now what is come when you multiply these two matrices? It is know that there are 1 and 1 both are equal. So you will get the matrix of order 3 by 3 as a result. So now you start the multiplication of these two. 514 and 257. First row multiply by the first column. So 5 2s are 10. First row multiply by the second column. 5 5s are 25. First row multiply by the third column, that is 35. Similarly, second row multiply by the first column. Second row multiply by the second column, and second row multiply by the third column. And now third row multiply by the first column, third row multiply by the second, and finally third row multiply by the third column, that is 28. So now you see the order of this resultant matrix will be 3 by 3. So what you see in these two examples, it is very important example these two because many of the students makes the mistake here. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं खासतौर पर इन दोनों को जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऑर्डर को पहले चेक कर लें कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी। तो हो सकता है आपसे मिस्टेक ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 1 by 3 और 3 by 1 था तो मैंने पहले गैसिंग कर लिया था कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 1 by 1 ऑर्डर की आएगी यानी सिंगल टोन मैट्रिक्स आएगी। और इस वाले एग्जांपल में मैंने पहले ही गैसिंग कर ली थी कि जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 by 3 ऑर्डर की आएगी। तो इसलिए आप इन मिस्टेक्स का ध्यान रखना, आप पहले ही चेक कर लेना कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी। तो उससे आपकी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। तो आपने इन एग्जांपल्स में देखा, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं जिसमें आपको और भी क्लियरिटी बढ़ेगी। लेट्स सी दीस टू एग्जांपल। लेट्स सी इट इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 3.2। आप जब 3.2 में आएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 से पहले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस सब्ट्रैक्शन और एडिशन पर डिपेंडेड है। So now you will try to this question number 15 which are totally depend on to the theory of multiplication of matrices। हमने अभी आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको बताया गया है। तो अब आइए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। इसमें a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। i यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आई थिंक यू ऑल नो दैट व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज द ऑर्डर 3 by 3 because it is the given matrix A which is already 3 by 3 order. So I is also 3 by 3 matrix here, 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. So let's start the solution of this question. First of all, the first term is a square and a square is written as a multiply a. So now you write this value of a here, 201 213 1 minus 1 0, and again the value of a is 201 213 and 1 minus 1 0. And you know that the order of these both matrices are 3 by 3 and 3 by 3. So now you are able to multiply these two matrices. And what is the rule of multiplication? First row multiply by the first column, then first row multiply by the second column, then third column, because there are three columns here. Similarly, second row
first column, second row, second column, second row, third column. And now third column, third row, first column, third row, second column, and third row, third column. It is the rule of multiplication, and I think you all know that what is the process of multiplication. You always multiply the corresponding values of the rows and column. So it is the first row, na? So the first element of this one is 2. So 2 multiplied by 2 and then 0 multiplied by 2. Similarly, 1 multiplied by 1. And now first row second, 2 multiplied by 0, 0 multiplied by 1 and 1 multiplied by minus 1. And then 2 multiplied by 1 plus 0 multiplied by 1 and 2 multiplied by 1 and 0 multiplied by 3 and then 1 multiplied by 0. So it is the rule of multiplication. Similarly now row number 2 is 2. So 2 multiplied by 2, 2 multiply 1 multiplied by 2 and 3 multiplied by 1. Now second row second column, 2 multiplied by 0, 1 multiplied by 1 and 3 multiplied by minus 1. And now 2 multiplied by 1, 1 multiplied by 3 and 3 multiplied by 0. Now third row first column, 1 multiplied by 2 and it is minus 1 multiplied by 2 and 0 multiplied by 1. Third row second column, 1 multiplied by 0, minus 1 multiplied by 1 and 0 multiplied by minus 1. Similarly third row third column, 1 multiplied by 1, minus 1 multiplied by 3 and then 0 multiplied by 0. It is the rule of multiplication. And now you simplify it. 4 and 1 5. It is 0 0 and minus 1 is minus 1. 2 and it is 0 and 0, that is 2. 4 and 2 6 and 3 9. It is minus 3 and plus 1 is minus 2. And here 2 and 3 5. And now in the third row 2 and minus 2 is 0. So you will get 0 here. You can see there are only minus 1 is come because both are 0. And in the last there are 1 and minus 3. So you will get minus 2 here. So it is the value of a square. After that a square you see there are 5a. So it is a scalar multiplication of a with 5. So you just write the value of a here, which is 201, 213 and 1 minus 1 and 0. So each and every element of this matrix multiplied by 5, then you will get 10, 0 and 5 and 10, 5 1 is 5, 5 3 is 15, 5 minus 5 and 0. It is the value of is 5a and then 6i. So what is the value of 6i? 6 multiplied by identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So you will get 6 0 0 0 6 0 0 0 6. And now these three values of a square, 5a and 6i substitute here and find the value of these three terms. Now you can see. Now you will substitute these value here. The value of a square is 5 minus 1 2, 9 minus 2 5 and 0 minus 1 minus 2. And the value of 5a is 10 0 5, 10 5 15 and 5 minus 5 0. And the last, the value of 6i is 6 0 0 0 6 0 0 0 6. So according to the rule, you add these two matrices and you will get 5 and 6 is 11, minus 1 and 0 is minus 1, 2 and 0 is 2, 9 and 0 0, 9 and 0 is 9, minus 2 plus 6 is plus 4, 5 0 5 and then 0 0 0, minus 1 and minus 2 plus 6 is 4. And this value as it is 10 0 5, 10 5 15, 5 minus 5 and 0. And now you subtract these two matrices, and I think you all know that what is the process to subtraction. You just subtract to the corresponding values. 11 minus 10 is 1, minus 1,
it is minus 1, then 2 minus 5 is minus 3, 9 minus 10 is minus 1, 4 minus 5 is minus 1, 5 minus 15 is minus 10, 0 minus 5 is minus 5, minus 1 and plus 5 is 4, and last 4 minus 0 is 4. So it is your required answer of this value. A square minus 5a plus 6i gives you this result. So I think you understand this question number 15. And if you have any query and if you want to ask to the any other question, then you just write in my comment box. And please you like, share and subscribe my channel to see the more video of this chapter. And now we will discuss the some properties which are associated with matrix multiplication, and we discuss these all properties very fast. Now you see one by one. First property say that matrix multiplication is not commutative. You know that the commutative property for addition a plus b is equal to b plus a, but in matrix AB is never equal to BA. In general, we always say that AB is never equal to BA, but matrix multiplication is associative like this. AB multiply C is equal to A multiply BC. So associative property exists in matrix multiplication. Whenever both sides are defined, it is the condition whenever both sides are defined. If both sides are defined, then both are equal. Now, matrix multiplication is distributive. I think you all know that about the distributive property and distributive over matrix addition. This is A matrix and there are B plus C. Then you write this matrix in the form of AB plus AC. Similarly, A plus B multiply C is written as AC plus BC. And now number fourth property is if A is m by n matrix, then Im multiply A is equal to A is equal to A multiply I, where I is called identity matrix. And I think you know that in addition operation I already told you what is identity matrix. In addition आपने देखा होगा 4 में प्लस को 0 को हमने ऐड करते हैं तो 4 आता है. देन आई एम सेइंग जो 0 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. ऐसे ही मैट्रिक्स में एडिशन के लिए नल मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी और यहाँ पर जो आई मैट्रिक्स है वो ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ए आ जाएगा. और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, अब वो किस ऑर्डर की होगी ये डिपेंड करता है ए पर. तो ए और आई का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ए ही आएगा. तो आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if A is m by n matrix and O is null matrix, then I think you all know that जब भी हम किसी भी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा. सिमिलरली मैट्रिक्स में भी यही होता है. अगर आप नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे देन रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो. तो यहाँ पर भी ये बताया गया है A मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज से दैट a raised to power n plus 1 is written as a raised to power n multiply a. Like this, if you write a cube in the form of a square if a multiply a, and similarly you will write a5 in the form of a4 multiply a. And the next property is a raised to power n multiply a raised to power n is written as a raised to power n plus 1. It is I think very simple property which you already know that in your previous class. आप सब जानते हो इस प्रॉपर्टी के बारे में और शायद ये प्रॉपर्टी भी आपने नंबर सिस्टम में जरूर पहचान ली होगी. तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स में भी अप्लाई होती है. तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है जिसको मैंने बहुत जल्दी से आपके सामने बता दिया है. ये प्रॉपर्टीज आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या फिर किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम में आ सकती है. तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज को लर्न कर लें, इनके रिजल्ट्स को देख लें. वी नॉट रिक्वायर्ड टू द प्रूफमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी. सो लेट्स सी. अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ बिकॉज मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक और वीडियो लेकर आपके सामने जरूर आऊँगा, क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन ऐसे बचे हुए हैं जिनमें हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और सीखना है. बिकॉज देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर इन एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड देयर आर मैनी कॉन्सेप्ट्स आर रिमेनिंग इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो मैं बहुत जल्द आपके सामने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट. सो अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को इसका लिंक जरूर भेजें जिससे वो भी इसका बेनिफिट कर सकें. सो गुड बाय एंड टेक केयर.